Assalamualaikum student. Welcome back to Google Classroom. Student, in this lecture we will going to study 1.4 of the set. This is last exercise. But before that we have to study that the number in set. Now we have to study number in set. Number in set, it is a one small kind of formula we can say. That is number of element of A union B. It is a symbol of union. Okay, is equal to number of element of A set plus number of element of B set minus number of element A intersection set. It is a symbol of intersection. Student, here we have to study union intersection. Okay student, union. Understood what is I am going to say? A very easy explanation I am giving you. Union means all element. Okay, union means all element means we have two sets A, B, P, Q, R, whatever set is given. Okay student, we have to write the element one at a time. All element one at a in union. क्वेश्चन पूछा होगा कि यूनियन सेट बना तो आप क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट को एक बार लिख लेंगे. एंड इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट. Remember this very two important thing. Intersection means common element. A और B साइड में जो भी कॉमन रहेगी आपको वो लिखना है. ओके, यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ 1.4, the first question is given. What is given in the first question? See, it is given, I am writing solution here. What is given? Number of element given A 15, number of element A union B is given, that is 29, number of element A intersection B is given 7. Okay, now we have to find number of B element. Okay student, it is given in the question. You have got as with you. See the question. Now I have written what is given in the question. Okay, so what I am going to use here, the formula for that, A union B is equals to number of element of A set plus number of element of B set minus number of element of A intersection B. I have the number of element of A union B, that is 29. So I should write here 29 equals to number of element A set. It is given 15. Number of element of B set we don't have as it is, minus number of A intersection is given 7. Now first of all what we are going to do here, 29 equals to plus minus. So 15 minus 7 will be 8 plus A intersection B. So here see I have number to the left hand side, I will call it to the right hand side. तो क्या हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, right? Now minus this, so I got 21 as an number of element of B. So how we going to write here? That is number of element of B is equals to 21. Understood student? Come on, have a look one more time fast. Okay, hope you
you understood this one, right? Now we are going to do the next question. That is, it is in the word problem form. You have to read the question. You have to understood what is the two different set they given, and intersection is given or not, union is given or not. Okay. Here are some small thing I must inform you. Let me check what. Okay, student. See, I am reading a question in front of you. In a hostel, there are 125 students. In a hostel, there are 125 students. Okay. Means complete hostel में कितने स्टूडेंट है 120. हॉस्टल मीन्स कंप्लीट ना, तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. गुड. आउट ऑफ 80 ड्रिंक्स टी, 80 ड्रिंक्स टी, उनमें से कितने हैं 80 क्या करते हैं टी तो चाय पीते हैं, तो ये एक सेट हो जाएगा. एंड 60 ड्रिंक कॉफी, और ये 60 जो है वो सेकेंड सेट हो जाएगा, मतलब बी सेट हो जाएगा. एंड 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ, 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ. अगर क्वेश्चन में बोथ आता है, अगर क्वेश्चन में स्मॉल में आपको एक चीज बताती हूँ, अगर क्वेश्चन में बोथ आता है तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन सेट. और क्वेश्चन में और आता है ओ आर और, तो वो हो जाएगा यूनियन सेट. मतलब सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं. समझ में आया? एकदम दिमाग में रखना. आगे क्या बोला है? एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी. मतलब हमको ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढना है जो टी कॉफी दोनों भी नहीं पीते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे जो टी एंड कॉफी पीते हैं, है ना. तो मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले यूनियन फाइंड करेंगे और फिर एक यूनिवर्सल सेट से हमको माइनस करना है. चलिए देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है. इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट. सो कैसा लिखेंगे आप यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग दैट you be the set of student in the hostel. सेकंड का दिया हुआ स्टेटमेंट. ओके, हमको दो सेट लेना है ना. एक जो 80 जो ड्रिंक करते हैं टी एंड कॉफी, राइट ना, टी ग्रीन टी पीते हैं, और एक 60 जो है वो कॉफी पीते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक्स टी. नेक्स्ट, set B be the set of student who drinks, or we are going here, who drinks coffee. Okay, tea and coffee, two sets are given, so I written it. Okay, now we are going to write what is given in the question. So universal set के एलिमेंट्स 125 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, राइट ना. they given 125 स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट. कितने स्टूडेंट टी ड्रिंक करते हैं? दैट इज 60, 80. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट हु ड्रिंक्स कॉफी, दैट इज 60. और भी कुछ दिया गया था, क्या था? 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी एंड कॉफी बोथ है, तो मींस हम क्या लिखेंगे उसको? ए, यस बोलिए. बोथ आया तो इंटरसेक्शन है, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा. ठीक है. नो, अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और जिससे हम क्या करेंगे, पहले यूनियन फाइंड करेंगे स्टूडेंट. सो यूनियन के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? देखो, ए यूनियन बी.
element of A union B is equal to number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B. ये लिखी हमने फॉर्मूला, रिप्लेस कर दो. यूनियन वी डोंट हैव एज इट इज, राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A union B is equal to element of A I have here 80 plus number of element B I have 60 minus 20. So A union B equals to plus this 60, that is 140 minus 20. Okay student, so what are we going to write here? Therefore number of element of A union B minus this, I got answer 120. What is that? Student. Okay, so one statement we had to write. What we going to write? The number of student who brings tea or coffee is 120 student. Okay student, but question did not ask who drink tea or coffee. Question में क्या पूछा है? Who do not drink. So what we going to write here? One statement again. The number of student who do not drinks tea or coffee. So what we are doing? We are universal set, or we are writing what? We are taking universal set minus A union B. So universal set I have how many elements? 125 minus A union B, I just go here 120. So it became 5. Understood students? Understood? Now again we have to write the statement for that. है ना? What we want to write here? Therefore number of student who do not drinks tea or coffee. Okay student? Student one more time मुझे क्विकली बताओ कि अगर क्वेश्चन में यूनियन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे. इंटरसेक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स की कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, राइट ना? कॉमन एलिमेंट लिखेंगे. क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में हमारे पास बोथ आता है, बोथ मतलब क्या हुआ? ये बोलो, ये हो गया इंटरसेक्शन. और आता है तो ये हो जाएगा क्या? यूनियन. एक छोटा सा तरीका है, मैंने आपके लिए बता समझाया है कि आपको इजी पड़ेगा कि किस तरीके से कौन से एलिमेंट्स है वो नंबर्स किसके एलिमेंट से, यूनियन के हैं, इंटरसेक्शन के हैं. ओके स्टूडेंट, कम ऑन, एक फटाफट लुक कर लो, जल्दी से देख लो फास्ट. Okay, done student. Come on, next we going to do the next third question. It is fourth question given in your book. I am doing third one. Fourth you have to do by your own. Okay. Next time I will write the assignment and I will give you what question you have to do from problem set. Okay student.
last question I'm going to explain you on the board of this chapter. Student, watch the video more 2 times, 3 times. Download the videos and watch. Okay? If you don't understood, then contact me. Okay. Should I read the next question? What is that? In a competitive exam, 50 students pass in English. English के means one set. 60 students pass in mathematics, मतलब second set. Okay. Whatever symbol you can take. You can take A, B. You can take E for English, M for Maths. हाँ, जो easy लगता है आप वो ले लो symbol. 40 students pass in both subjects. Both आया student मतलब क्या हो गया? Intersection. None of them fail in both. कोई fail नहीं हुआ है. Find the number of students who pass at least in one subject. At least in one. एक subject में pass होने वाला student मतलब क्या? बोलो quickly. At least आ गया. अगर elements हम एक बार लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? Yes. हमको find करना है यहाँ पर union. सिर्फ union find करना है. Come on. तो अभी हमारे पास हम लोग को सब लिखना होगा ना? Statement सब लिखना होगा. तो on third question क्या लिखेंगे? Let set A be the set of student who pass in English. Set B be the set of student who pass in Maths. Okay. Now we are going to write what elements is given. Now number of element of A set, that is 50 they given right now. And next number of B set, that is 40. Isn't it? No, it is 60. It is 60. Sorry. 60. Next what they are given? 40 pass in both, means number of A intersection, that is 40. है ना student? Now we are going to use what? Formula. Okay? Now we are going to use the formula. What formula we are going to find it? Number of A union B equals to number of element of A set plus number of element of B set minus number of element of A intersection B. I don't have the number of element of A union B. What is the element of A set? 50. B set 60 minus 40. 50 plus 60, 110 minus 40. That is 70 student. Right student? Now one more important thing. Every word problem should have a statement. Now last final statement. Therefore the number of student क्या बोला है फाइंड करने? Who pass ED है क्या बेटा? Yes, ED pass at least in one of subject is how many student I got? 70 student. Understood student? Huh? Have one look, quick look. I will going to come give the assignment of from problem set, which very easy to do. Okay? Have a look. Stay home. Start studying. If you don't understood sometime, no, you watch the video one more time, 2 times, download the video and can watch. If you have any problem, then contact me. Okay student? Take care. Be safe. Allah Hafiz.